Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 is slot 3's summary questions. Okay, CAT 21 slot 3, all 4 RCs have been done and already uploaded. Please make sure to go through those. But right now in this video, let's go ahead solve some summary questions. Okay, so coming to this slot, broad view regarding all 3 questions, really good quality, really reasonable options. आप summary के जो basic logic, basic concepts है, you apply those and you will get the answers really smoothly. Compared to, let's say, CAT 22 slot 3 questions, which had really horrible question coming in the form of that Rowan Atkinson one. In contrast to this, CAT 21 slot 3, really good questions. We'll be able to solve those very quickly. Let's jump in for the first one. Okay. What does it say? Author says कि देखो, human mind is wired to see pattern. Okay. Our mind is always going to see what is the pattern, what is the type of things that keep on happening. Do they fit a particular fashion? Do they fit a particular trend or not? And our brain is doing that continuously. Non-stop चल रहा है बैकग्राउंड में पास्ट एक्सपीरियंसेस के भी जो इंफॉर्मेशन है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी जो हमारे लर्निंग्स है, दैट इज गेटिंग कंबाइंड non-stop with whatever experiences we keep on getting daily basis. Okay, and every interaction, everything happy, sad, wonderful, or joyous or defeating, everything gets cataloged in a memory. And lastly, author is saying, rounding off this discussion in this one sentence, that in other words, intuition, okay, gut feeling जिसको हम कहते हैं, intuitive decisions are based on data, they are based on information and not contrary to what some people say. What do some people say? Author says कि कुछ लोगों को एक गलतफहमी हो रखी है that intuition, gut feeling वाले decisions, they are not based on data. Author says ये बात गलत है. Intuition, intuitive decisions, they are very clearly based on information, they are very clearly based on data. Okay, and what is happening behind the scenes, whenever we experience anything, whenever we subconsciously spot a particular trend or pattern, body में processes होना चालू हो जाते हैं, in our gut as well as in our brain. Technically speaking, what do we mean by gut? Small intestine आप कह सकते हो उसे, ठीक है. तो gut feeling is another way of saying intuition. And biology में research ने prove किया है that actually कहीं ना कहीं आपके brain का और आपके small intestine, आपके gut के working बहुत strongly linked है एक दूसरे से. If I were to digress, I can also make a side commentary. That is why when you are going through a lot of stress, either you start eating a lot or some people end up losing their appetite. And what does that have to do with it? Because your gut health is also taken a hit. Okay, so gut feeling can be called as intuition. The two terms are used in an interchangeable manner, which is completely fine. Okay, so whenever we subconsciously spot patterns, whether good or whether bad, whatever, something is starting to go on in your body, and your body starts telling you कि yes, ये चीज अच्छी है, अरे नहीं ये चीज खराब है. That something is maybe right, या फिर something is maybe off. Okay, and then closing remarks once again coming in from the author. He is saying all of this is happening really fast. Okay, all of this automatic processes, they happen faster than rational thought. मतलब आप किसी चीज को लेकर rationally सोचोगे, यार ये चीज अच्छी है, is this thing good or bad for me, then you are weighing the pros and cons and all that. On the other hand, your gut feeling like, dude, this is okay, this is bad, very quick, very fast. Okay, but that doesn't mean कि आपका rational thought is superior or intuition bogus है. No, on the contrary, what the author says is your intuition, your gut feeling is actually using a database of many decades of experience. Assuming that you're that old, okay, at least 20-30 years old, तभी जाके ये concept apply हो जाएगा decades वाला. But yes, what we can understand from this is that your intuition, that your gut feeling is not some random आवाज coming in from your दिल, दिमाग or gut. No, it is something which your brain is doing behind the scenes, going through a lot of data which it has already compiled, and based on that, it is firing some kind of conclusion, whether something is good or bad. And closing remark once again coming in from the author, very emphatic, and I was pleasantly surprised to see this touch coming in. What does the author say here? Author is saying this speed and this accomplishment of gut feeling
It is a completely human feature, wholly human feature that big data alone can never ever accomplish. Whoa. Okay. 99% of the passage of the paragraph, author is talking only and only about the superiority of gut feeling. Suddenly, in the last closing remark, he has taken a swing. He has taken a strong sarcastic taunt at big data. Not even sarcastic, it's a direct taunt. कि big data क्या ही achieve कर लेगा, हमारा intuition is far superior. Okay, okay. Now, going by the tone of the paragraph, you can see immediately that the author is completely in favor of the power of your gut feeling, intuition, and he says that उसको जो भी है, जैसा भी उसका working है, it is founded in good logic. It has its foundations in good data processing. It's not random. Okay. And of course, making intuition far superior in technical terms to, let's say, some new brand new technology like big data. ठीक है. So ideally speaking, we would like a answer option to show this superiority of intuition. कहीं ना कहीं जो ये क्लोजिंग रिमार्क है ऑथर का, इच्छा रहती है कि जो बिग डेटा से ऊपर सुपीरियरिटी ऑथर कहता है इंट्यूशन को लेकर, वो मिल जाए हमें ऑप्शन. बट ठीक है, लेट्स गो सी व्हाट द ऑप्शंस आर. One thing about summaries that you should always keep in mind is there are no holy grails here, in the sense that you cannot go in with a rigid fixed mindset कि नहीं, ये आखिरी ओपिनियन नहीं मिला ना तो मैं आंसर ही मार्क नहीं करूंगा. नो, यू कैन नॉट गो लाइक दैट. यहाँ पर आई ऑफन लाइक टू यूज दिस सेइंग कि सर्वगुण संपन्न ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलना. ओके, आइडियल ऑप्शन नेवर एग्जिस्ट. यू ऑलवेज हैव टू सिलेक्ट ए आंसर इन अ वे लाइक कि भाई ये चारों घटिया है, बट चारों में से सबसे कम घटिया कौन सा है. ऐसी भी सिचुएशन बहुत बड़ा. वेरी फ्यू टाइम्स यू माइट कम अक्रॉस एन ऑप्शन व्हिच इज सो वेल राउंडेड, so nicely framed that पढ़ते बराबर you are like, wow man, yes, this is going to be my answer. I don't care for the other. But a lot of time that's not going to be the situation. Okay, so let's go and attack the options now. Option A, what does it say? It says that intuition is infinitely richer than big data. Okay, ठीक है, चलो, the superiority that we wanted over big data has come in. Okay, but here is the problem now. What does it say? Big data which is based on rational thought. Wait a minute. This is where this option collapses. Why? Because the qualifier that you see here, after which blah blah based on rational thought. तो ये कौन है rational thought के ऊपर based? Big data. It's acting on big data, not intuition. ये बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि कभी भी who या which आपको दिख जाए इस तरीके से, उसके immediately बाद में जो भी ज्ञान आने वाला है, at least till this point, is a reflection on, is acting on immediately the word placed before which या फिर who. ये बिल्कुल गलती नहीं करना है आपको by thinking कि ये based on rational thought is talking about intuition. No, no, no. It's acting and talking only about big data. तो हमें तो कहीं पता ही नहीं, पैराग्राफ हमें बताता ही नहीं है whether big data is based on rational thought or is it based on some other technology or blah blah blah. So immediately out of contention, this is making some out of scope remarks. ठीक है, let's go to the second one. Intuitions are automatic processes. Okay, all right, automatic process mentioned over here in last fourth line. ठीक है, and therefore faster than rational thought. यहाँ तक भी ठीक है. And so decision based on them are better. Oops, ये क्या हो गया कि इंट्यूशन के दम पे आप जो डिसीजन बनाते हो वो बेहतर ही होते हैं. ये कहाँ बोल दिया ऑथर ने? एंड ऑफ कोर्स चलो ठीक है, बेटर तो बेटर, तो बेटर कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू रैशनल थॉट वाले डिसीजंस, कंपेयर टू डिसीजंस बीइंग मेड बाय लेट अस से अ बिग डेटाबेस कंप्यूटर प्रोग्राम, और डिसीजंस बेस्ड ऑन देम बेटर कंपेयर टू एनिमल्स के डिसीजन. हु नोज? तो ऑप्शन बी का क्लोजिंग रिमार्क इज समथिंग वंस अगेन कंप्लीटली out of scope of the discussion out. Third, intuition draws from deep memory. Okay, this part is fine. May not be related to data. Horribly wrong. Author ने इसका exact opposite बोला है. Let's see what the author says. कि intuitive decisions, they are based on data. And what does C say? Intuition may not be related to data. Wait a minute. Wrong. Completely related to data है. So option C, very easy to eliminate. Naturally, answer becomes which one? Answer option B.
Intuitions are neurochemical firings. Yes, sure. This somatic markers wala thing which the author has talked about, firing neurochemicals. Okay. Based on pattern recognition, completely correct. When we subconsciously spot patterns, yes, based on pattern recognition, absolutely right. And draws upon a rich and vast database of experience. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. That part is also completely written in the paragraph. So there is this one small disappointment कि यार superiority over big data तो लिखा ही नहीं है. तो ठीक है, चलो अभी एक्सपीरियंस सॉरी कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही होगा थोड़ा सा. ठीक है, सर्वगुण संपन्न ऑप्शन नहीं मिलने वाले. So that superiority over big data might be missing, but other than that, at least the option has nothing twisted. It has absolutely no other red flag. So very calm and coolly you can select it and move to the next question. Still, if you have any doubts, please drop them in the comment section. Okay, coming to the second question now. Very short paragraph. Two sides of the narrative were given over here. First half में क्या बोला है देख लेते हैं, and फिर उसके बाद में second half भी discuss करेंगे. Second half comes in from this part, the opposing. उसके पहले कुछ बात की है और उसके बाद में अपोजिट बात की है. So let's see what does the first half discuss. What does the first half have to say? कि there are people who say कि idle बैठना, idle meaning lazy, not doing anything. Anything such are not doing anything productive, meaningful. हम देखते हैं ना कुछ लोग दिन रात ऐसे ही निकाल देते हैं, कुछ के दिन कोई मीनिंगफुल काम नहीं करेंगे, या फिर लेजी पड़े रहते हैं इधर उधर. तो दैट कैन बी सेड दैट दिस मैन इज वेरी आइडल. ओके, IDLE, not to be confused with idle, IDOL. Okay, this is a completely different. Okay, it can mean an icon, somebody worth deriving inspiration from, somebody worth emulating. या फिर idol हमारे as far as Hindu mythology, Hindu religion is concerned, you can even say जो मूर्ति हम रखते हैं मंदिरों में, that can also be called as idol. ठीक है, so not to be confused with this, IDLE is actually a negative word. ठीक है, so what does the first half say कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि पीपल से खाली बैठना, being idle, being lazy is a sin. What you should be doing is you should be working really very hard. Industriousness as a virtue. अच्छा चलो ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. But in the process, what has happened is, author says, the people have developed an unsatisfactory relationship with their jobs. They are doing things just to keep themselves busy. और खाली बैठना नहीं है किसी भी कीमत पे. तो बस दिन रात खुद को घिसते रहते हैं, खुद को पुश करते रहते हैं. And in that process, a lot of them are actually involved in stuff which is really meaningless. तो ये तो काफी सरप्राइजिंग हो गया कि people are working, but whatever they are doing is sort of meaningless. Oh my God, very sad, right? Okay. And in desperation to keep themselves active, to keep themselves working all the time, people are choosing hobbies which are technically a form of work. Example, fishing, gardening. एक टाइम था जब ये काम ही हुआ करते थे, but now people have made hobbies out of them just to keep themselves engaged. So first half is giving a pretty strong negative outlook with respect to working and keeping on working all the time. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. तो आगे देखते हैं सेकंड हाफ में क्या बात की है. सेकंड हाफ में ऑथर सेज द अपोजिंग व्यू इज व्हाट. अपोजिंग व्यू इज कि नहीं देखो यार, हार्डवर्क की वजह से जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं वो उसी की वजह से. हार्डवर्क हैज मेड अस प्रॉस्पेरस, improved levels of health and education. बहुत बढ़िया. It has brought innovation, labor, time saving devices, जिससे हमारी जिंदगी की ड्रजरी कम हुई है. मतलब ड्रजरी is something very negative. Long hours of toiling, leading a miserable life, facing a lot of problems here and there at every nook and turn. That is called as leading a life of drudgery. तो ऑथर सेज नहीं, हार्डवर्क की वजह से ये सब निगेटिव बातें कम हुई है हमारे लाइफ में, पॉजिटिव बातें बढ़ी है. Our standard of living, the way we live our daily lives has immensely improved. Okay. So what we have is, in this paragraph, we have first half which is discussing negative aspects of hard work. Second half is discussing the positive aspects. ठीक है, तो fundamentally speaking, we should have answer option discussing both the sides of the story. कोई ऑप्शन अगर सिर्फ एक साइड को चिपक के बैठ जाए, दैट इज रियली नॉट प्रेफरेबल. ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा जम्बल्ड फॉर्मेट में देखेंगे. ऑप्शन बी फर्स्ट.
Some people believe that hard work has been glorified to an extent that it has become meaningless. ये थोड़ा थोड़ा मुझे problematic लगा. Hard work has not become meaningless. What people are doing, rather many people's jobs are meaningless. तो ठीक है, हल्का सा red flag यहाँ पे, but still not to be uh, pushed further. That would amount to splitting hair and led to greater idleness. Immediately हमें मिल गया इस ऑप्शन को ट्रैश करने का रीजन. नोवेयर इज इट रिटन कि हार्डवर्क की वजह से लेजीनेस बढ़ा है, हार्डवर्क की वजह से आइडलनेस बढ़ा है. रादर रॉन्ग. When people view hard work as a virtue, idleness has to go down because it is looked as something negative, very negative. People don't want to stay idle. And what does option B say? Greater idleness, horribly opposite out. See, hard work has overtaken all aspects of our lives. बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कितना heavy generalization है. And has enabled economic prosperity. ठीक है, फिर भी okay. But it is important that people reserve their leisure time for some idleness. Where is this written? कि नहीं यार बॉस, आप ना थोड़ा सा साइड में बैठो, खाली बैठो, चिल करो आप. Nowhere is this recommendation coming in from the author. Nowhere at all. ठीक है, तो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम एक्स्ट्रा ज्ञान लाइक दिस. कुछ कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जो थोड़े से इस तरह इन्फरेंसेस टाइप चीजें लिख देते हैं ऑप्शन में. इन समरी क्वेश्चंस प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इन्फरेंसेस एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, अब बचता है ए और डी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों भी ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं. अब ये हमारी मजबूरी है कि हमको एक आंसर ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करना है एंड दैट बिकम्स आंसर ऑप्शन ए एक्चुअली. व्हाई सो? बिकॉज इट कवर्स बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट बहुत अच्छे से. कि कुछ लोगों ने हार्डवर्क को आइडियलाइज कर दिया है. आइडियलाइजेशन, वंस अगेन प्लीज कीप इन माइंड, अगेन नथिंग टू डू विद आइडियली आइडल. ये आइडियल है. ठीक है, please forgive my Devanagari writing, it is really bad and I don't know whether what I have written is correct or not. And this is ideal. ठीक है, तो आइडियल मतलब बेस्ट, परफेक्शन, समथिंग आप देखकर कहते हो मुझे ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए सब कुछ. परफेक्शन वाला सिचुएशन कैन बी सेड टू बी लाइक आइडियल केस. ठीक है, एंड आइडल इसका मीनिंग हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किए, खाली बैठना, being lazy, not doing anything. ठीक है, so what some people have done is they have glorified hard work so much that they have idealization of hard work की वजह से क्या हुआ है कि people have now fallen into meaningless jobs and endless activity. Yes, first half में यही बात की कि आप हॉबी के नाम पे भी एंडलेस एक्टिविटी कर रहे हो. जो काम गिना जाता था गार्डनिंग एंड फिशिंग, आप उन्होंने उसकी भी हॉबी बना चुके हैं, दिन रात बस खुद को बिजी रखने के लिए. नॉट कूल ना. ओके, but on the other hand, it has also led to tremendous social benefits from prosperity and innovation. Really, really good. बहुत अच्छा ऑप्शन डिस्कसिंग द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हार्ड वर्क इन द सोसाइटी करंटली, बहुत अच्छे से. तो व्हाई डज ऑप्शन डी फेल देन? उसने क्या गलती कर दी? ऑप्शन डी एक्चुअली वेरी सैडली वी हैव टू रिजेक्ट इट. बट मेरा बहुत दिल आ गया था ऑप्शन डी पढ़ने के बाद. What does it say? That there are some people who are detractors. Detractors का meaning people who criticize, people who disapprove of you. Okay, तो detractors को आप कह सकते हो critics. 1 minute. Detractors मतलब haters थोड़ा गलत हो जाएगा एक्चुअली. Strong critics बोल दो आप. ठीक है, बहुत ताकत से आलोचना करने वाले, बहुत स्ट्रांगली आपके शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट करने वाले. तो ऑप्शन डी से कि ठीक है, देयर आर सम पीपल हु स्ट्रांगली क्रिटिसाइज हार्ड वर्क, बट hard work is really essential in today's world to enable economic progress, education, health, to propel innovations, blah blah. तो क्या हुआ है इसमें गड़बड़ ऑप्शन डी में? इट हैज फोकस्ड एक्सेसिवली ओनली ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हार्ड वर्क. बट डिट्रैक्टर्स क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ क्या कहता है कि यार हार्डवर्क की वजह से लोगों ने खुद की जिंदगी का क्या से क्या बना के रख दिया है. वो वाला एलिमेंट इज नॉट कमिंग इन प्रॉपरली. It tries to shoo it away by simply writing in 3 words despite some detractors. So downplaying strongly the first half of the paragraph, which is not okay.
थोड़ा तो भी डिटेल में लिखना चाहिए था कि व्हाट इज द आइडिया विच डिट्रैक्टर्स ऑफ हार्डवर्क से, कि हार्डवर्क की वजह से पीपल हैव गॉटन इनटू मीनिंगलेस जॉब्स वगैरह वगैरह। थोड़ा भी ऐसा कुछ मेंशन होता तो ऑप्शन डी कुड हैव इमर्ज्ड एज द विनर ओवर हियर, बट ठीक है, कोई बात नहीं, देयर कैन ओनली बी वन विनर। ऑप्शन ए फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग, हेंस इट बिकम्स द आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत ही बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑथर इज veering from negative to positive and then once again to negative in this paragraph. What does he say? Let's see. Okay. Author says Brazil का growth rate, of course economy की बात हो रही है यहाँ पे, it has been low, but what? Most Brazilians they are happy in the sense they say कि नहीं यार हमारी तो financial situation has improved and we expect it to even get it even better. And why is this happening? Because most incomes they are rising fast. There are higher wages out there, low unemployment, very good. Inequality is falling, amazing. Growing middle class, again, very, very solid. पॉजिटिव बातें हुए जा रही है बहुत सारी, इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पावर. So all of the part that I've highlighted in blue, all are the positive aspects of the Brazilian economy at this moment. And then once again, the author is veering off towards the negative aspect again. But what? That Brazilian economy, it is still very, very unequal, still painfully unequal. ये तो डबल टॉक नहीं हो गया? एक तरफ ऑथर कह रहा है कि इनइक्वालिटी गिर रही है, ऑथर सेज कि लेट्स से शुरुआत में if inequality was at 100, inequality is falling, so today it might be at 70, seems to be going back towards let's say 60. inequality is falling, कम हो रही है, मतलब इक्वालिटी बढ़ रही है समाज में, बट स्टिल जो भी है आज के अमाउंट में, इट इज स्टिल वेरी हेवी. 60-70 भी इनइक्वालिटी होना बहुत ज्यादा हो चुका है. दैट इज व्हाट द ऑथर से. एंड on the back of it, what is happening in society right now, author is saying कि poor people जो है ना, उनको बहुत ज्यादा मार लग रही है. Poor Brazilians, they are paying the biggest share of their income in taxes, but getting a very raw deal from the government, getting the least back in the form of government services. ठीक है, so what are the points discussed in the paragraph? Very short में discussion. Most Brazilians feeling improvement in their financial conditions because XYZ other factors. Author says, but still a lot of inequality remains in society, and poor people, they are getting a really raw deal from the government in spite of paying immense huge amount of taxes. ठीक है, let's see what the options discuss. Option A, good economic indicators, they have mask का मीनिंग होता है छुपा दिया. ठीक है, छुपा के रखा है अनफेयर टैक्सेशन ऑफ द पुअर. ठीक है, ये बात भी ठीक है, चल जाएगा, आखिरी पैराग्राफ में आखिरी लाइंस में लिखा है. बट likely to destabilize Brazilian economy, ये बात तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कोप हो गई. दिस प्रेडिक्शन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द पैराग्राफ कि आने वाले सालों में ब्राजीलियन इकोनॉमी इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज, इट्स गोइंग टू कोलैप्स. नो वे एट ऑल, कहीं भी नहीं लिखा है. आउट. बी, economic reforms have benefited many Brazilians, but they are unaware of impending problems from rising inequality in their society. Once again, horribly wrong. Why? Because it is doing some kind of prediction कि समस्या आने वाली है, impending, about to come, about to arrive. Once again, no predictions regarding future not made in paragraph at all. Secondly, rather rising inequality तो author ने बोला ही नहीं है. Author is actually saying that inequality has fallen, it is falling. What he is not happy about is that कि कम होने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी बची है. 60-70 अभी भी इनइक्वालिटी है, तो ठीक है, कम होगी धीरे धीरे पॉसिबली, बट कोई भी तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ नहीं रही. तो ऑप्शन बी हैज टू ह्यूज एरर्स इन इट, हेंस किक्ड आउट. सी, most Brazilians feel they have benefited from recent economic events. Yes, this part is okay, this part is right. I would like to go back to the paragraph and check this most wala part. Is this okay? Yes, this is okay. Most Brazilians say that their financial situation has improved.
सो ठीक है, ये वाला पार्ट इज ऑल राइट, बट द पुअर कंटिन्यू टू बी डेल्ट अनफेयरली बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लोजिंग रिमार्क ऑथर का अच्छे से पकड़ा है इसने कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इंप्रूव हो रही है सोसाइटी में, बट पुअर पीपल दे आर स्टिल गेटिंग अ वेरी रॉ डील फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई टैक्सेस। बहुत बढ़िया ऑप्शन, very strong inclination to select it, but still let's go take a look at what D says. D is saying with rising incomes and falling unemployment, most Brazilians are being misled into thinking that their economy is doing well. एक मिनट, प्रॉब्लम है यहाँ पर। Being misled into thinking, what does it imply? That there is somebody, or maybe there is some group, some government, whatever, they are consciously misleading Brazilians. Wait a minute, कहीं पे ऐसा लिखा है क्या? No. ऑथर से रादर बहुत सारे ब्राजीलियंस को जो लगता है कि यार हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हैज इम्प्रूव, ये लेजिट है उनका फीलिंग, क्योंकि वेजेस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम है समाज में, इनइक्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऑल ऑफ दैट फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, ऑल ऑफ दैट ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग व्हिच अ लॉट ऑफ ब्राजीलियंस फील, इट इज गुड, इट इज रैशनल। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, दैट इज द क्लोजिंग रिमार्क। बट व्हाट डज ऑप्शन डी से कि नहीं नहीं, कोई इंसान है, कोई ग्रुप है, वो गुमराह कर रहा है ब्राजीलियंस। नॉट गुड, नॉट गुड, ठीक है। एंड सेकेंडली, क्लोजिंग रिमार्क ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पुअर बीइंग टैक्स्ड अनफेयरली, ये पार्ट तो कंप्लीटली गायब, ठीक है। सो ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस बिटवीन सी एंड डी, इट इज एनीबॉडीज गेस कि ऑप्शन डी के सामने ऑप्शन सी इज फार सुपीरियर, इट इज कैप्चरिंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी रियली वेल, ठीक है। तो हेंस आंसर ऑप्शन बिकम्स थर्ड वन, ठीक है। So I hope that this question is also clear to you. All three questions, as you could see, really straightforward, really very doable. Okay. Still, in spite of that, if you have any doubts, please drop them in the comment section. More than glad to help you. Thanks a lot for watching. Thanks a lot for your time. If you like the content, please like, share, subscribe to the channel. Please press the bell icon so that as soon as I upload any new video, you'll get a quick notification for it and you can get a jump start on your prep. ठीक है, तो चलो देन, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट विथ योर प्रेप, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।